Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. The subject is science. Unit number 2, lecture number 8. Our today's topic is kinds of microorganisms. Student, today we are learn about the next two kinds of microorganisms, which are fungi and protozoa. But before this, let's review the whole topic of microorganisms. The word microorganism means a very tiny organisms which cannot be seen with the human eye. We used microscope to see them. They are also called microbes. Microorganisms are found all over the world. They are found in plants, in animals, in the air, in the water, in the soil, in or on our body, and on the surface of every object. And people also use the word germs when they talk about the harmful microorganisms. We also learn about the unicellular and multicellular organisms. Unicellular organisms made up of only one cell, while the multicellular are made up of billions of cells. If we do an activity with the help of water, we use some drops of water and see the water under the microscope, you can see easily the microbes. Kinds of microorganisms. There are four main kinds of microorganisms. These are viruses, bacteria, protozoa, and fungi. In our previous class, we learned about viruses and bacteria. Smaller than bacteria, viruses can grow and survive only when they are in living cell of organisms. They are harmful to animals and plants and can cause many diseases like smallpox, hepatitis, cold, and Ebola. Bacteria. If I talk about bacteria are unicellular organisms. They grow and multiply rapidly, and they exist in three basic shapes: circle shape, cylinder shape, and spiral shape. They also cause many diseases like typhoid and pneumonia. Some of bacteria are useful. They help us in making of yogurt and cheese. Bacteria are also useful for humans and other animals and plants. Now student, open page number 13. Our today's topic is fungi. Some fungi are unicellular and some are multicellular. कुछ फंगी जो हैं वो यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले और कुछ ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं. They can be microscopic and macroscopic. Microscopic means which cannot be seen with the human eye, and the word macro mean बड़ा. They can be seen with the human eye. कुछ फंगी हम आँख से देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते.
The fungi includes a vast variety of organisms such as mushrooms, yeast and mold. You can see the picture of mushroom and I also show you the picture of yeast and mold. Let's have a look please. Yeast, molds. They cannot make their own food and obtain their food from other organisms on which they grow up. फंगी अपना जो फूड है वो खुद तैयार नहीं करते, बल्कि जहाँ पर ये बढ़ रहे होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये बढ़ रहे होते हैं, वहीं से अपने ये फूड भी लेते हैं. You must have seen green mold growing on stale bread. आपने ग्रीन कलर की जो मोल्ड है उसको आपने देखा होगा स्टेल ब्रेड पर, यानी कि जो रोटी ब्रेड ख़राब हो जाता है. स्टेल मीन ख़राब, बासी ब्रेड पे आपने देखा होगा. एंड रोटिंग फ्रूट्स, सड़े फल. आई शो यू द पिक्चर ऑफ स्टेल ब्रेड. लेट्स सी दिस वन इज स्टेल ब्रेड. If you see the stale bread under the magnifying glass, you can see the fungi. And if you see also under the microscope, you also see the fungi. Some fungi like mushrooms are edible. कुछ fungi like mushroom जो है वो खाए जा सकते हैं. But some are poisonous and should not be eaten. लेकिन कुछ जो हैं वो जहरीले होते हैं और आप उसे नहीं खा सकते. If you eat them, it can be dangerous. Some fungi obtain nutrients from dead animals and plants. कुछ फंगी जो हैं वो डेड एनिमल और प्लांट से हासिल होते हैं. These fungi are decomposers. ये फंगी क्या है? डीकम्पोजर्स हैं, जो कि किसी भी बॉडी को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. फंगी डिकम्पोजेस बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मेक सॉइल फर्टाइल. फंगी एज अ डिकम्पोजर्स जब वर्कआउट कर रहे होते हैं तो ये जो सॉइल है उसको फर्टाइल मीन सरखेज़ बना देते हैं. आई कैन शो यू द पिक्चर ऑफ फंगी, yeast and mold. Now open the page number 14. Decomposers are organisms. What are decomposers? Decomposers are organisms that break down dead or decaying organisms and in doing so. Decomposers क्या करते हैं? डेड बॉडीज जितनी भी होती हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं. सो दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. इन अदर वर्ड, डिकम्पोजर्स आर organisms that break down dead or decaying organisms, and in doing so they carry out the natural process of decomposition. Fungi can also grow on the human body and can cause skin infections like ringworm and athlete's foot. फंगी जो हैं वो ह्यूमन बॉडी पर भी ग्रो अप होते हैं और स्किन के इन्फेक्शंस जो हैं वो फंगी की वजह से ही स्प्रेड होते हैं. लाइक रिंगवर्म, यू कैन सी दिस इज़ द डिजीज़ ऑफ एथलीट्स फुट. इट इज़ ग्रो अप ऑन द ह्यूमन बॉडी and cause skin infection. You need to keep your skin clean to avoid such disease. हमें अपनी जो स्किन है उसको क्लीन रखना चाहिए ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके. Yeast, the word yeast mean उर्दू मीनिंग इज़ खमीर. Yeast is a fungus used in making bread and some antibiotics. यीस्ट की मदद से हम क्या करते हैं, यीस्ट जो है वो ब्रेड में यूज़ होता है और एंटीबायोटिक्स में.
Yeast is a fungus used in making bread and some antibiotics. The next kind of microorganism is protozoa. I can show you the picture of protozoa. Protozoa are unicellular organisms. Protozoa भी unicellular organisms हैं, rather like bacteria, बल्कि ये बैक्टीरिया की ही तरह होते हैं. If they enter the body, अगर ये जिस्म में दाखिल हो जाएं, they can live and grow. ये ज़िंदा रहते हैं और बढ़ते हैं. They grow in moist places and are commonly found in water. ये गीली जगहों पर पाए जाते हैं और आमतौर पर पानी में. Dysentery is caused by a protozoan. Dysentery means पेचश is caused by a protozoan, and so is diarrhea. इसे आप डायरिया भी कहते हैं. Student, you can again see the picture of protozoa. They are live in moist and wet places. Commonly they are in water, and they cause also the disease of diarrhea. How are fungi useful for human being? Question number 8 of your book. How are fungi useful for human being? फंगी किस तरह इंसानों के लिए यूज़फुल हैं, फ़ायदेमंद हैं. गिव 2 एग्जांपल्स. आपने इसकी 2 मिसालें देनी है. मशरूम इज़ अ फंगस दैट इज़ एडिबल. मशरूम एक फंगस है जो कि खाई जा सकती है, खुर्दनी है. यीस्ट इज़ ऑल्सो अ फंगस. यीस्ट भी एक फंगस है दैट इज़ यूज टू मेक ब्रेड. यीस्ट किस लिए यूज़ होता है? ब्रेड बनाने के लिए. एंड सम एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स के लिए. स्टूडेंट्स, योर डायरी इज़ रीडिंग page number 13 and 14 and learn question number 8, and you can also write it on your notebook. Thank you so much.